Assalamu alaikum students. Our today's topic is simple pendulum. हम इसके बारीक से बारीक एस्पेक्ट्स भी कंसीडर करेंगे। हर बात इसमें हम कंसीडर करेंगे। मीन पोजीशन क्या होती है, रेस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। आप लोगों ने इसकी लॉजिकल डेवलपमेंट करनी है, नहीं तो क्या फायदा रट्टा लगाने का। रट के तो इंसान हर चीज़ सीख लेता है, मगर सीखता नहीं है, बस रट लेता है। There should be certain logical development of every step and everything, every minor thing. तो I'll let you know about everything. या मैंने आपके लिए एक सिंपल पेंडुलम भी बना के रखा है, वो भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ. I'll make you understand about each and everything. Please try to understand. और बाद में लेक्चर के एंड में I'll give you the notes as well. You can make the beautiful notes as well. You can write down in the notebook. Then you can give me the comments. Your comments are very important for me. Nobody gives the comment at all. The comments encourages the teacher. There's a little introduction of myself. थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताता हूँ. My name is Professor Hamid Ashraf Siddiqui. I started my career from FC College Lahore. There I taught the classes from FSC to MSc classes. And you know what I taught to MSc classes? Electricity and magnetism. I taught both of the two. I had the first position in Punjab University in applied mathematics. Applied mathematics include all the applied subjects like physics. Did you know that I have studied electricity, magnetism, statistics as well, mechanics, dynamics, thermodynamics, mathematical methods of physics? It seems to be that I have studied so many subjects of physics. That's why then I was awarded Best Teacher Award on Punjab level. And so many achievements are there. Step by step, I'll let you know that. Then I've been teaching in the various colleges in the different capacities. I love teaching. I've been head of the IT department, mathematics department, and I taught physics, information technology. I was chairman of the committee of the Rawalpindi board in computer science. So all the subjects I was involved in, all the subjects. So we start with the lecture. A simple pendulum is a very simple thing. I'll let you know what that, the construction of that simple pendulum. Look at this figure. This is the first figure, and you can have this figure in your notes as well. At the right hand side, this is the figure. And this ball, metallic ball, is called ball. And this is the string. Actually, this is light string. Inextensible string. Light means that doesn't have any weight. Inextensible means cannot be stretched. इसको लंबा नहीं कर सकते. Or it is displaced. It is called equilibrium position or the mean position. The pendulum is stationary at this point O. Then it is displaced from the position O to the position A, where the restoring force acts. Then I'll let you know what is the restoring force. Firstly, I show you this figure. This I made for you in Microsoft Office Word. ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है. ये देखें, ये mean position है. It is displacement from the mean position. It comes to the extreme position A, where is weight is acting vertically downward, and this is a component of the weight. ये एक हिस्सा है weight का जो कि restoring force की शक्ल में इसको चलाने में मदद दे रहा है. ये मैंने अलग से फिगर बनाई हुई है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा. Then what happens when the bob reaches at A? A restoring force acts upon that towards the mean position O, and this bob start moving towards O. Its velocity goes on increasing and increasing. At the point O, its velocity becomes maximum, and due to the high velocity and inertia doesn't stop at O, keeps on moving. Velocity goes on decreasing because the restoring force is in the opposite direction. Stop for a while at B. ये फिगर है, एक्चुअल फिगर जो आपके नोट्स में शामिल है. यहाँ पर ये बॉब है, इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. तो हाउ कैन वी हैव द रेस्टोरिंग फोर्स? जब कोई फोर्स जैसे mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, AC इज द स्ट्रिंग एट द पोजिशन A. टेंशन क्या होती है? टेंशन इज अ फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, and it is always inward from the endpoints. A से अंदर की तरफ. Respect to A, it is inward. Respect to C, it is inward.
This is the definition of the tension of the string. What is the tension of the string? It is a force along the string as direction is inward from the end points. So what we have done is, ये mg जो vertically downward act कर रहा था ना, इसके दो component बना दिए हैं, एक along the string, एक perpendicular to the string. ये मैंने अलग फिगर बना के आपके सामने रखी है, just to make you understand about that. It's very important. ये आपने बहुत अच्छा समझना है. बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो सिर्फ ax, ay या fx, fy के चक्रों में पड़े रहते हैं. किसी भी लाइन के साथ जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉज होता है. ये लाइन है, रेड वाली को हमने लाइन समझना है, mg को फोर्स समझना है, ये इसको हमने रिजॉल्व करना है. तो यहाँ से इसको पकड़ना है फोर्स को, ये जो वेट है इसको यहाँ से आपने पकड़ लेना है, यहाँ सिरे पे से पेंसिल रख लेनी है और इसको अलोंग द एंगल ऐसे रोटेट करना है, इसकी डायरेक्शन वगैरह लाइन तक पहुँचाना है. ये सब कुछ एक साथ अटैच हो जाता है. इसको हमेशा एक्स कंपोनेंट कहते हैं. ये आपने याद रखना बेटा, बहुत यूजफुल होगा न्यूमेरिकल्स करने में, हायर स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. जिस तरफ ये एंगल बन रहा है उस तरफ अगर हम इसको रोटेट करें, ऐसे रोटेट करते जाए, ये मैंने पहले से बना के रखा है, तो ये इसका वाई कंपोनेंट आ जाता है. वाई कंपोनेंट तो नहीं कहना चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहना चाहिए कि यहाँ पे एक्स और वाई तो है नहीं. और हमेशा परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है उसके साथ साइन लगाते हैं, mg sin थीटा. देखिए मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ. ये पुरानी पोजीशन में पहुँच गया है, यहाँ से इसको पकड़ना है, पकड़ के अलोंग द एंगल रोटेट करना है, ये इसका एक्स कंपोनेंट. और फिर वही द कंपोनेंट अलोंग द लाइन है, दूसरा कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, इट इज दैट, एंड इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगल. जिस तरफ एंगल की डायरेक्शन जा रही है उधर बनाना है. सो एट दिस पोजिशन T tension, there's a tension T that cancels this mg cos theta, this tension, and both of these two are equal and opposite, so they cancel, and we are left with one force mg sin theta which is acting toward the mean position O, and it makes the bob to oscillate between the point A and B. ये इसको चलाती है, ये आपने याद रखना है. This is the second thing, how the restoring force is obtained. At the position A and B, the velocity remains zero, and restoring force is maximum at A and B. And velocity of the bob is maximum at the point O, doesn't stop at the point O, keeps on moving because of the inertia and high velocity. And when it crosses the point O, its velocity goes on decreasing and decreasing, ultimately becomes zero at the point B. And because of the restoring force, it again moves toward the point A. And because of the restoring force, it is oscillating between A and B. Look, it is made in Microsoft Office, Word, so it is very good thing. It appears to be like certain animation or something. ये देखें कितना अच्छा है. ये बेटा, ये आपको नोट्स आपने बाद में बना लेने. ये फिगर को मैं पेस्ट कर देता हूँ इसकी असल जगह पे नोट्स के साथ, या आपने इसको पॉज करके इसके आपने नोट्स बनाने पूरे. ये नीचे इसके यहाँ पे अलग से ये मैंने सारा कुछ बनाया हुआ था आपके लिए. यहाँ पे आपने ये लिखा हुआ है सब कुछ. इस फिगर को यहाँ लगा देते हैं ऐसे. ये देखिए ये फिगर आपकी लग रही है, साथ नोट लिखे हुए. इसको मैं ज़रा साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी रहे लिखने में. ये लिखे बेटा, नोट्स बनाइए. और अलग अलग मैंने लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन, एक्सट्रीम पोजिशन, how the restoring force is obtained. Then there's a second page. यहाँ पे बेटा जो एक बात तो ये, it is all the same motion we have described in the previous page. Time period of the motion t is equal to 2 pi l over g होता है, स्क्वायर रूट डला हुआ है इसके ऊपर. ये आपने याद रखना है. टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन l and the force of gravity. l की कितनी कीमत बढ़ाते जाते हैं, टाइम पीरियड उतना बढ़ता चला जाता है. अगर इसकी जगह 4l लिख दें आप तो क्या होगा बताइए, कितना बढ़ेगा. यहाँ 4 लिख देते हैं, जैसे मसलन ये 4l बन गया, तो 4 को कॉमन निकालेंगे, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 हो जाएगा, ट्वाइस 2 टाइम्स इसका टाइम पीरियड में इजाफा होगा. ये आपका आता है बेटा MCQs में. दूसरी बात, कई दफ़ा ये कहा जाता है कि बॉब का मैस अगर बढ़ा दें, ये लिखा है मैंने आपके लिए फॉर योर इंफॉर्मेशन. बॉब का अगर मैस, इस पर मैस है ही कोई नहीं टाइम पीरियड में, तो टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर ये ग्रेविटी को बढ़ा दें बहुत,
ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका ये रेसिप्रोकल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड जी के। तो जी को जब बढ़ाते हैं तो टी कम हो जाता है, जी को जब कम करते हैं टाइम बढ़ जाता है टाइम पीरियड। सो ये बातें बेटा आपने जहन में रखनी है सारी, और इंशाल्लाह कल मुझे बताना है, गिव मी द कमेंट्स हाउ डिड यू फाइंड दिस लेक्चर एंड एवरीथिंग, क्लियर कॉन्सेप्ट आपका हुआ है कि नहीं। ऑल द बेस्ट।